Sabha, Vinita, Yeah. Manjushri, Anjana. So today I'm going to be speaking about women empowerment. First 20 minutes I will talk about it. Then I want you all to retrospect and reflect internally. Are you feeling empowered? And if not, then what is not letting you feel empowered? And that is what we're going to write on. A lot of reflection since morning because I had to do the lecture on this. So I kind of go back into my space to ask myself, am I feeling empowered? And that's where the question starts. If I'm sitting here and I cannot tell you that I am feeling empowered, then who am I to teach you about this subject? And who am I to tell you how and what to do to feel empowered? So I will only talk about my space. What all did I do to empower myself? And I will let you guys speak about your space. Is that good? Is that good? So first, till 1:30, we're just going to share orally. And then we're going to write it down and share it back again. Good job, all of you are with me? Okay. So I'm going to just get on the slides. By now, you know I'm not the slide person. I get very distracted with slides because as it is, everybody's 1 centimeter tall with their faces beaming and some of them not even there. And in that, when I get the slides, I feel kind of a little bit distracted away from the story. And yet I think it's a very good tool. It really makes me think every time I'm making. And I chose the picture. I'm becoming more and more aware of the pictures that I'm selecting. I chose a picture of a lady who doesn't look that empowered. I want you to look at her picture and tell me, do you think she's empowered? Do you think she's not empowered? सिर्फ इतना, इसकी शक्ल देखिए और बताइए आपको क्या लगता है कि ये औरत empowered है कि नहीं है? चलिए फटाफट चैट बॉक्स में डालेंगे आप कि एम्पावर्ड है कि नहीं है. वेट कर रही हूं मैं आपकी सबकी. चलिए. नो, वंदना सेज नो. ठीक है, कंटिन्यू ऑल ऑफ यू. नो. Yes, she is in her own space. Very good. She is in her own space. Okay, let's go on. एक नो और यस लिखना है यार. वाई एंड एन भी लिखोगे तो चलेगा. क्या आपको लगता है ये औरत इस पिक्चर में एम्पावर्ड है? Sabha says yes. Yes, absolutely. She's empowered. Okay, very good. So today we are going to be journaling on Women's Special Day, journaling about empowered as a woman. And we are going to be looking at reflecting on a woman and learning about what really empowerment means and how we can accept ourselves, which is so important. More than anything else that we do, it's the most important thing. So I'm bringing myself back. Those were my slides and they're done with till we come to the end of the program. Okay. हाँ, तो कितनों ने कहा कि वो empowered है, वो lady empowered है? शाबाश. और कितनों ने कहा empowered नहीं है? आंसर ये है कि हमको पता नहीं है. इसी तरीके से just like that we guess work. आप मुझे देख के सोचेंगे कि I am very empowered. After all, every second day I'm sitting over here and giving you a lecture. I'm just a little bit more educated. And yes, education gives you empowerment. तो यहाँ से शुरू करते हैं. I was reflecting today morning. When I was getting married, it was not because I wanted to get married. It was because I had already become
23 years of age, coming from a Punjabi family, and my younger cousin sister had got married. I had completed my master's in textile chemistry, and I was the first girl to go out and teach in a college. Meaning the first girl to go out and work. Did I feel empowered? Interestingly, for my mother, my education had no meaning. I'm not saying कि उनको कदर नहीं थी, पर मीनिंग नहीं था. मतलब वो मुझे इसलिए पढ़ा रही थी कि ताकि मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए. और प्रॉब्लम ये थी कि my marriage had started becoming a question mark because अनु के हाथ में बुक ज्यादा और आदमियों की फोटो कम और औरतों की फोटो कम थी. I was like a little child with my pen and pencil, my books, my things. खुद में ही मस्त रहना. किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी मुझे. Absolutely happy go lucky person. मस्ती कर रही थी. इतनी मस्ती करी कि my teachers made me the head of the department from textile chemistry. She walked up to me, Mrs. D'Souza, and said, "You are my next teacher." And I looked at her and said, "मेरे को कुछ नहीं करना है, मस्ती करनी है." She said, "You have no idea what you have." I said, "What do I have?" "You have the boldness and the spontaneity to do what you want to do." तूने कभी ब्लैम ही नहीं दिया. Till then, I thought I was really empowered. दो जगहों पे इकट्ठी मेरी बम्बू बजा था. एक शादी और दूसरा मेरे कॉलेज में, बिकॉज उनको समझ में आ गई थी इसकी माँ इसकी शादी कराने वाली है. नन्स वाला कॉलेज था. उन्होंने कहा चलो ये तो बहुत महंगा पड़ने वाला है हमारे को. I had taught 3 years in college by then and had a huge fan following. I was the youngest teacher, wearing unconventional clothes, teaching in an unconventional way, and doing extremely well. So much so that year, जहाँ 30 लोग used to apply for textile chemistry, we had more than 100 people applying for textile chemistry. I was called into the room of my HOD who had employed me. No, she had left by then. There was another principal of the college who called me. I won't take her name. She's not there in this world. God bless her. And said, "तुम क्या करती हो ऐसा? तुमने ऐसा क्या किया कि इतनी सारी लड़कियां," because it was a girls college. मेरी मॉम ने मुझे गर्ल्स कॉलेज में डाला था यार. पता क्यों? सरदार उठा के ना ले जाए मुझे. ये कहीं भाग के लड़की शादी ना करा ले. एम्पावरमेंट की बात करते हो. ट्रस्ट नहीं था. और मजे की बात ये हुई कि मुझसे ये पूछा गया, तुम ऐसी क्या बातें करती हो इन लड़कियों के साथ कि सारी की सारी टेक्सटाइल केमिस्ट्री करना चाहती हैं. मैं क्या गाना गाती हूँ जी हर रोज. आ जा रे, ऐसे ही बोला था. मेरी प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया कि ये तो बहुत बदतमीज है. उसके बाद ना हमारे नाम के नीचे थोड़ा सा रेड लाइन लग गई थी. पर क्या करें, कुछ ऐसा बदतमीज आदमी भी चाहिए होता है लाइफ में. Anyway, long story short, my parents started looking out for a boy, and I felt so unempowered that there were times when I said, Oval Medan comes in between before I reach my college. I used to go to Nirmala Niketan College of Home Science in Mumbai at Marine Lines. And I was teaching over there. People thought I was very empowered, and I wanted to sit in the garden over there at the Oval Medan, putting a patta saying,
मुझसे शादी करा लो, मुझसे शादी करा लो, क्योंकि मेरे माँ बाप दुखी है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ गई। यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी बिकॉज आई कैन सी द रिएक्शंस ऑन योर फेसेस। आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विद यू टुडे। इससे ज्यादा ऑनेस्टी, ये बीता हुआ वक्त मुझे याद आया, और सवाल ये है कि आज भी वी आर ट्रेनिंग आवर गर्ल्स फॉर ओनली टू थिंग्स, only two things. One is to get a job, another is to be a good housewife. और तुम्हारी कदर वहां है जब तुम टाइम नहीं दे पाते हो घर पे। ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। जब तुम बच्चों को पैदा नहीं कर पाते हो, ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। तुम्हारी सारी पढ़ाई कहीं लंगोट साफ करने में और बर्तन साफ करने में तो नहीं निकल गई है। यहाँ ये सवाल है कि वाकई में आप एम्पावर्ड हैं, और अगर हैं तो बताइए कैसे हैं। बिकॉज आई एम रियली लुकिंग एट द मैरिज सिस्टम, आई एम लुकिंग एट द सिस्टम विद विच आज भी कहा जाता है हमारे बच्चों को तुम कंप्लीट नहीं हो, या तो तुम काम करोगे, बेकार हो अदरवाइज, या तुम शादी करोगे। और शादी के बाद पंगा खत्म नहीं होता। लड़कियों को बोला जाता है कि शादी के बाद एवरीथिंग विल बी ओके। शादी के बाद बोला जाता है एवरीथिंग विल बी ओके, उसके बाद सेक्स ना करना आए तो पंगा। एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू मेक चिल्ड्रन देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और आज बर्बादी ये है कि एवरी फोर्थ गर्ल टुडे हैज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब बच्चे पैदा करना मुश्किल है। चलिए मैं यहाँ बंद करती हूँ मुंह। I want your hands up and I want you to talk to me before we can put anything down on the paper. आपको क्या लगता है कि आप empowered हो? आपने किसी को empowered देखा है? इस सिस्टम से अलग देखा है? अगर है, नहीं है, what are your views on what I have just presented to you? Thank you so much. कि सोच में पड़ गए। रोडा जी, yes, thank you. अचला सेठी, जरा प्लीज शक्ल दिखला जा। मुश्किल है जवाब, बहुत मुश्किल है जवाब। It's not easy because the society is so complex and the life is also not complex. You cannot describe, you have to experience that. And empowerment is that you choices you make for marrying someone, your profession, and continuing your profession, and when to drop that and take a responsibility. So I feel very empowered. I am a physician. I worked in army, married a man of my choice. And now I have left the profession. I'm doing a granny's duty. So my daughter can continue her profession without have to contribute to house much and without अच्छा, looking after the baby. यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी, अगर आप अपनी बेटी के लिए नहीं खड़ी होती तो उसे क्या करना पड़ता? उसको छोड़ना पड़ता फौज को, जैसे मैंने छोड़ा। यही 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 हमने सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट किया है? हमने सिर्फ ये कहा कि जाके काम करो, हमने सिस्टम्स को ठीक क्यों नहीं किया है? सिस्टम ठीक होगा जब हम ठीक होंगे, जब एक फैमिली ठीक होगी। शाबाश अचला, हम क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? क्योंकि हम ठीक होना चाहते नहीं हैं, क्योंकि इसे हम सभ्यता बोलते हैं। I am very happy and glad and proud that you are helping your daughter. Thank you. Thank you for understanding that. So many women who don't get that help, and they are far ahead in their education and in their capacity. बच्चे बड़े करना is one of the best experiences that I have experienced in my life. They opened my heart. And yet तो सवाल ये है कि जब आदमी बाहर काम करने जाता है तो एक बार भी ये दिमाग में किसी के नहीं आता कि वो बाहर काम करके कैसे जाएगा. But when a woman goes out and she's equally capable,
ये दिमाग में जरूर आता है. Thank you. Anything else you want to say, Achla? Your contribution today was amazing. We women are what I feel is generally against, because those who are housewives, they want to compete with the working woman. We keep the house very nicely. We dress up very nicely. That competition is always there among the women folk. I think if women folk understand that we all are equal and the choices are to go out or work, to stay at home, because looking after home is not a joke. Rearing children is not a joke. No. So they must understand that they are empowered and not compare with the working woman. She was capable, she had choices, she has chosen a tougher life, looking after home and working outside also. So working outside is also not a joke. You are faced with so many men, so many And if the situations where competition you have to starts, sail through. if the competition starts at home between the mother-in-law and the daughter-in-law, then it is a bigger joke. If the competition starts at home between the mother and the daughter, or mother-in-law and the daughter, or sister-in-law and the daughter, it's a bigger joke, because the very people that you want support from, and when you don't get it, you know what is going to empower people is how we support each other. Absolutely, absolutely. And husband There support was a also. lot of Husband adjustment. support. I think it's कोई और तो बोला, कोई और तो बोला, रुकिए रुकिए लेके आ रही हूँ. I'm यही तो Geeta. है. हाँ जी गीता जी. I think it's a matter of a lot of adjustments, a lot of adjustments for the woman. I'm not saying for the man, for the woman, in trying to balance your working life and your home life. Yes, I have had to do a lot of adjustments too, but now things have set it up. See, I would say I was empowered because my parents were very understanding. My father died young, but my mother didn't pressurize me into marriage or anything. And I studied till I studied till my MPhil, and then I worked as a journalist, as a TV news reporter for Doordarshan for quite some time. Then of course, then I chose my husband and we married. Okay. And the thing is, I didn't stop working. I was working. Of course, it was a 24-hour job. So it became a bit difficult when the children were born. And those days support systems were not too good, and we were from Calcutta and we'd come to Bombay, so there were no in-laws or parents or anybody around. So those crashes and all were very bad. I couldn't even think of it. So finally I had to quit. I did quit, but I quit willingly, because doing यही गीता जी, यही तो सवाल है. yeah, I had to quit because I was the one who had to adjust. That is what I said. It's a matter of a lot of adjustment. But I enjoyed it, for some time. Sometimes in the back of my mind, I used to feel, oh God, why did I have to quit? It used to be there, undoubtedly. But then I said, okay, since I had jab bachcho ko paida kiya hai, I might as well put my full-time this thing onto them. So when they grew a bit bigger, then again I started working, but not as a journalist, because that was a 24/7 job. That became very difficult. I started again training. Since I was an MPhil in English, I started training boys in restaurants like mainland China now, restaurant etiquette and spoken English. Wow. So that was a totally different line, totally. But in that I was able to adjust home and work. Wonderful. And I was doing a lot of writing work also. So that way, that is what I said. It's all a matter of adjustment. And now, of course, I am happy with my get set up, my dances, my singing, a lot of other things that I do. And I started a home bakery, which I'm doing from home. This is all happened with the COVID. So I would say, yes, I am empowered. I am happy with it. I just want you to watch and hear what she's saying. And this is where we think it's normal. Yeah. We've made it normal. And what is normal is the woman is working or not working. I will go back to my question. Do we train girls only to get married and work? Is that true empowerment? Or do we provide them something that would really hold them together? And what I'm hearing is
that each one of them had to adjust, adopt, face the criticism, competition. But no man had to ever think. It feels like the man had no choice but to go out and work. And he's angry because of that. कि मुझसे तो तुम पैसे कमाने को बोल ही रही हो. How I bring that money to you should not be a question mark. And a woman does not have a choice but to make the children, bring up the house, whether she stays alone and empowers herself, but her work is then to empower her son, daughter, when she doesn't feel empowered. हम वो कैसे दे सकते हैं किसी को जो हमारे पास नहीं है? Anybody else who wants to talk? I really appreciate if you can come out and talk. Because thank you. Who is this? कोई बात नहीं. खांसी का मतलब ये है कि आप कुछ एक्सप्रेस कर रही हैं जो आपने बहुत सालों से किया नहीं. करिए करिए. Very good. Shabash, Geeta. I would think financial independence gives a lot of empowerment. Absolutely. A lot of empowerment, yes. Absolutely. In any way, she can be financially independent, even in any small way, whether you're giving tuitions or anything. I think that's Geeta, the sawal is yehi. I love it that I had financial independence, but most of the girls who are financially independent do not have independence. Thank you. And this is, I'm not talking from just anything. I'm talking from my everyday work. I still know of girls who don't want to be in marriage and are there even after being very, very qualified, even after getting a job, even after getting everything that she could do by herself. She's got the beautiful nails, manicured nails. She looks like a perfect woman, but doesn't feel. I'm talking about the feeling. I'm talking about that feeling. क्या महसूस किया? क्या महसूस किया? क्योंकि हम लड़कियों के ऊपर और बोझ डालते चले जा रहे हैं. तुमने पैसे भी कमाने, इस वजह से तुम एम्पावर होगी, तुमने बच्चे भी पैदा करने हैं. But she's asking for something more. Are we hearing her? What is she wanting? Something more. Any idea? थोड़ी heated सी conversation हो रही है यहाँ पे, और बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम अगर अपने आप को नहीं देखेंगे, हम empowerment एक word सोच के चल रहे हैं. It's a whole ball game. It's a whole lifestyle. It's a whole lifestyle change. It's a change in the society of how they believe that a woman should have or not have. What is her duty or not her duty? हम choice दे कहाँ रहे हैं? हम तो उसे कह रहे हैं दो चीजें choose करो. Yes, please come in, Achala. Please talk. You were beautiful. Please bring yourself back. She is a slave to the circumstances. Can you please? Yeah, she is. She has to adjust. And if she doesn't adjust, then she's labeled bad, and the society is not fair to single girl. She has to have a lot of courage and a lot of inner strength to survive in the society. And there are very few metros where a woman can survive. So it's a circumstances which force us. And when I was working, if somebody would come, my advice was an experience, not a bookish sentence. I used to say, if you can say, face one wolf at home, face it, because there are 1,000 outside. Absolutely. So, thank you. So it is, I really like it that you have understood what I'm talking here about. हमें अगर change लानी है, really we want to bring a society which is empowered, we need to first understand, does empowerment only mean financial independence? Does empowerment only mean getting married, making children, and then empowering them? आज भी क्यों लड़की बोलती है कि मेरा रंग गोरा नहीं, मेरी स्किन खराब हो रही है, मुझे कंपेनियन नहीं मिल रहा. I am talking about a soulmate ढूंढ रही हैं. soulmate मिला ही नहीं अपने को यार, क्योंकि soul तो दिखता ही नहीं है.
मेट का तो खैर बात ही अलग है. So it feels as if आज भी वही तलाश है, आज भी वही तलाश है. दिल ढूंढता है फिर कभी फुर्सत के रात दिन. यस अंजना, आ जाइए. Ma'am, I feel that empowerment is something that we have to evolve into. Now, I think we are becoming conscious of it. And just a woman thinking of it is not going to solve that. A part of it is coming up, but the whole society as such, they should change their way, evolve into understanding what each human being, whether it's all about being human beings and taking up their responsibilities. Doesn't mean that, it should be a girl or a boy. Even men, I'm sure they won't be feeling empowered. No, We they aren't. assume that they are. We No, assume they are. They aren't. They don't have a choice but to get the bread and Exact. butter. Just like Choice you don't have a choice but to make a child. Ma'am, we say that our future, everybody says that, our future, our destiny is our choice. But are we really able to make those choices? डरते हैं हम अंजना. We are Yes. scared to make Oh, yes. choices. That's the seminar I did yesterday with you guys or day before. We are scared to be a star. We are scared to shine. We are scared to be in our full power. And why is that? Oh, I am, ma'am. I am, ma'am. I have got it in me, but I'm scared of what people will say. Okay, Anjana, say that once again, and I want everybody to watch her. Just please say that. Oh, I want to do many things, but those are things that society as such will not be approving of. Very And good. I am so scared. Stop right there. I want you to see what she was doing. This is beautiful. Every time she spoke that she wants to do, her eyes went up and her eyes closed. Her eyes went up and then her eyes closed. Every time she said, I can go out and do, her eyes were closed. You know what that means? I don't believe that I'll be able to do it. Yes. I want you to keep your eyes open, remove your chashma, talk to us, saying what you had to say. Thank you so much, Anjana. Okay. I want to do many things. I have got it in me. I know I have, but I do not have the strength or the courage to go ahead and face that and do it. Shabash. And I think I'm blaming others. Very good. Can you see every time she said, I do it, she still blinked. I blame others, she still blinked. It's really interesting. Thank you, Anjana. I really love you. I'm just making us, our body speaks. Forget our mouth speaking, our body speaks. And if we are not feeling empowered, our body says that loudly to the other person. फिर हम बोलते हैं कि दूसरों ने हमें अंडर एस्टिमेट क्यों किया, क्योंकि हमने अपने आप को वैल्यू नहीं किया. Again, ma'am, that's because we are not allowed to. That's because we were never given a choice to. Okay, anybody else? One more person sharing or two more people and then we start writing on this hot sizzling topic. Sabha ji, aa jaiye. Sabha, teri awaaz nahi aa rahi hai. I am very much agree with Anjana how she told, but we have a limited boundaries. We cannot cross that boundaries. We have so much stamina and strength and so many creativity boundaries. We have concealed ourselves in that limited area and accepting Sabha. the same thing from others also. Thank you, Sabha, for that. ये हमारी कंडीशनिंग है, ये हमारी कंडीशनिंग है which is coming from way back in time. और जब तक हमारी कंडीशनिंग चेंज नहीं होगी, खुद चेंज होने वाला नहीं है. Because the way my parents were searching for me, nothing has changed today. I thought 30 साल में कुछ तो फर्क पड़ा होगा. I'm going to be married for 30 years. कुछ तो फर्क पड़ा होगा. हाँ, फर्क सिर्फ ये है आप कपड़े कुछ भी पहन लेते हो, लेकिन दिमाग और सोच
वही है, वही है। हाँ, कार्ड शायद बदल गए होंगे, व्हाट्सएप पे आने शुरू हो गए हैं, बट सोच अभी भी वही है। हाँ, शायद आपने इंटरकास्ट मैरिजेस करनी शुरू कर दी होंगी, बट सोच अभी भी वही है। थोड़ा सा फर्क पड़ा। But if I am carrying this, how Sabha said, I'm coming to you, Archana, that हम बाउंड्री से सीमित हैं, तो आई विल गो बैक टू द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट which is tied with a rope when he's very young, and then when he grows up they put a thin rope around his foot, and he's so mighty that he can walk anywhere and kill anyone if he wanted to. But the conditioning that the little thread has around his foot is कि मेरी बाउंड्री सीमित है। उसकी बाउंड्री सीमित की गई थी, सीमित नहीं है। चलिए अचला के पास आएंगे, फिर वंदना के पास आएंगे। अचला फटाफट। हाँ, फटाफट ये है कि divorce rates are going very high. So there is a change happening. The girls are not taking nonsense. First divorce, second divorce, third divorce, fourth divorce, and the girl doesn't understand that men are same. And the second is second बोल is रहे हैं आप, आदमियों को हमने बदला नहीं। my son says a very good one liner. He says the father have made the girls very strong and brave, but the men in the society are not ready for that. थैंक यू सो मच। अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार, है ना। चलिए वंदना, आपको लेके आते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू अचला। चलिए। हाय, हाय, थैंक यू। मेरी शादी को 40 इयर्स हो गए हैं, पर मुझे लगता है काफी बदलाव आया है, क्योंकि हम बदलाव यही आए। हाँ जी, बदलाव कहीं हम diverse खुद पहले जैसे थे, हमारे में भी विचारों में आया है, हमें बहुत इंडिपेंडेंसी हमें मिली है, हमें बहुत सारे राइट्स मिल गए हैं, और आगे बच्चों को तो मिल ही रहे हैं। देखिए, किसी भी समाज में दो तरह का वो चलता है, 100% आप नहीं बदल सकते। नहीं, मैं तो 100% की बात ही नहीं कर रही। मैं हाँ, ये बात लेकिन कर रही हूँ कि वंदना अंदर वो सारे बदलावों के बाद जब एक लड़की एक डाइवोर्स लेती है, दूसरा लेती है, तीसरा लेती है, वो एम्पावर्ड तब तक फील नहीं करेगी जब तक उसको उसका सोलमेट नहीं मिल जाए। और हमने वो सोलमेट क्रिएट ही नहीं किया है। मैं यहाँ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, हमने वैसे लड़के की परवरिश ही नहीं करी है। ही कैन ऑल्सो बी। हमने किसी ग्रूमिंग स्कूल नहीं डाला उसे। लड़कियों को जरूर होम साइंस कॉलेज में डाला, लड़कों को किसी स्कूल में नहीं डाला वे दे कैन नो हाउ। एक्चुअली ये सब चीजें स्कूल से आती भी नहीं है। आती हैं क्योंकि सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये ट्रेंड ही नहीं है। बात ये है कि हम नीदर एट होम एंड नीदर आउटसाइड। हाँ, घर में नहीं, ये सब चीजें घर में सिखाने की है एक्चुअली। हमने वो नहीं, जैसे फादर को देखेगा वैसे ही करेगा। शाबाश, थैंक यू जी, आपने सब कुछ कह दिया। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होती यारी। ऐसे है कि हम बंदर हैं, और बंदर की कहानी ये है कि वो सोचता नहीं है, वो कॉपी करता है। अगर उसके पप्पा ने सिर के ऊपर कैप डाल के बैठा है तो वो भी सिर के ऊपर कैप ही डाल के बैठेगा। और जब तक आप उसके सिर की कैप उतार के उसे भी ये सारा नारा नहीं दे देते, उसे एम्पावर नहीं कर देते, तो वुमेन का तो 4, 5, 6, 10। इट्स नॉट अबाउट द डाइवोर्स, इट्स नॉट एम्पावरिंग हर। डाइवोर्स इज नॉट एम्पावरिंग हर। Divorce is not empowering her. Staying in that family is not empowering her. She can't find a companion to give her love once she is empowered. ये प्रॉब्लम है। थैंक यू सबा खान। चलिए यहाँ से 10 मिनट लगाते हैं, 37 पे आ गए हम लोग। 7 minutes can you take and write down and then share. Thank you very, very much. Please put your pen on the paper, write down, because that writing is important. क्योंकि हम लिखने से क्या करते हैं, हम हर चीज को सॉलिड कर देते हैं। चलिए, जो आपके दिमाग में आता है कि आपको क्या लगता है कि हम कैसे लड़कियों को एम्पावर कर सकते हैं और लड़कों को एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही तबके को एम्पावर करेंगे तो कुछ होगा नहीं। हाउ, व्हाट इज द वर्ड एम्पावरमेंट मीन टू यू?
how can we empower people? चलिए फटाफट लिखिए. शाबाश. Ma'am, your words are touching our hearts, brain, and mind, everything. सबा, ये आग बहुत साल पहले की लगी है. ये सवाल जो जवाब आज तुमने उठा दिए, ये ऐसे था कि पंगे मैंने खुद से खुद ही लिए हैं. क्योंकि सिर्फ 4 सेमिनार करने से आप एम्पावर्ड फील नहीं करते. मेरी एम्पावरमेंट तब होगी when I am completely, I find my soulmate giving me that respect that he expects from me. Doing all that for me that I do for him. और मैं करती चली जा रही हूँ. Because it is expected of me. Thank you. चलिए फटाफट पेपर पेन लिखिए and start working, and I will play some music for you. I'm muting you all so that the sound reaches you.
चलिए और 2 मिनट. If anybody wants to share. Manjushri, want to share? Yes, Anudhi, I want to say, going for a job, as to see, that was earlier a big no in our family, but and work from home means doing an MLM work like a Tupperware का कर लो चाहे कुछ भी करो मतलब these small that is fine, you can do that work. हाँ वो अलग बात है पता in that going out is fine, no objection is there for that thing कि हाँ किसी के इधर सामान भी देने जाना है किसी के इधर से सामान लेके आना है, so there is no for that thing. But going for a work house in an office or in a school or anywhere means first you do the early morning total household work, matlab that is the big ritual, ठीक है, and then in the evening after coming back from that place, then come ask your in-laws or ask your husband whether he wants to eat, whether I'll make a chapati for him, whether he wants a glass of water, etc., etc. So these all goes on. Thank you. Thank you. So honest from the heart. Yes, Sanjana, want to share? Go ahead. I love the honesty that we are coming up with, and that's the authenticity and honesty always shows. Yes, Sanjana. Oh, I love to feel empowered. And to me, empowerment means having the freedom to be me, to explore the possibilities that are in me and not follow the norms laid down by society since time immemorial. By doing so, I feel that I will be a better human being as I can express myself, understanding my capabilities and being responsible for my actions, and not find fault with others. And the space to being myself will in turn allow me to give space to others to be themselves. And thereby the family can truly function as a family where there is love, understanding, and support. Shabash. That's true empowerment. When we allow others to be who they are and we accept, adopt, and completely look at ourselves and say, I am proud of who I am. We wait for others to give us that acknowledgement.
And thank you, ma'am, for, all these sessions, which are making me delve deep inside. And I'm trying to. It's a beautiful space that I am right now No, in. Anjana, the only thing you have to stop doing is try. Okay, Trying what other means- word is there? I'm trying- doing it. Trying means I'm failing. I will do it someday. Yes, Okay. trying means I'm failing. Change those words, Anjana, and say, I know how to do it. Just wrote it down, and I can. I'm doing it, ma'am. Wonderful, I'm that's doing it. all. Yay! She didn't close her eyes. Yeah, Did I you- close? No. Huh? I am doing it. Ah, I'm enjoying. I'm loving it. good. Very nice. चलिए आ जाइए सबा जी. महफिल सजे तो सबा हो यहाँ और फिर उसके साथ सुबह हो यहाँ. चलिए. Thank you. Women are strong, bold enough to become a slave for any circumstances. The path of drama after marriage start to success. Drama to success exists if you sacrifice your emotions and you make yourself happy. Either the surrounding is not in your favor. You have made the happy the society because they are not your bread butter, but that is your duty. You can't go beyond the limit. That's enough. You can understand. काफी काम बचा है, शाम को करेंगे. बढ़िया सबा. ये जो आप बार बार बाउंड्रीज को लेके आ रही हैं, इन्हें तोड़ना नहीं है हमने, बाउंड्री को स्ट्रेच करना. सोचिए ना, जैसे आपकी बॉडी, आपकी छोटी सी बिटिया जब अंदर थी, इतनी सी, फिर वो जब बड़ी हुई इतनी, आपकी बॉडी ने क्या किया? सीमाओं को तोड़ा नहीं, बॉडी को काटा नहीं, बॉडी एक्सपैंड हो गई यार. हम अगर हमारी बॉडी एक्सपैंड हो सकती है, वी आर गिफ्टेड, वी आर द जननीज, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ लाइफ. अगर क्रिएटर ऑफ लाइफ बाउंड्री के अंदर है तो वो क्या क्रिएट करेगी यार. और अगर बाउंड्री के अंदर सबा तूने इतना कुछ क्रिएट कर डाला, तो जब तू बाउंड्रीज को एक्सपैंड करेगी तो क्या करेगी यार. सोच के देख. इसी पे आगे बढ़ते हैं. हु इज गोइंग टू कम नेक्स्ट? Sri Mata, madam. अरे आ जाओ. कौन सी माता मैडम? No. You said we are the creators. यस, It's not. Yes, so it's Sri Mata. श्री माता. यस, स्त्री. In Lalita Sahasranama, the first three namas are Sri Mata, Sri Maharagni, and Sri Mat Simhasaneshwari, the creator, the sustainer, and the destroyer. समझ लो आप में स्ट्रेंथ कितनी. और आप मांग रही हैं एम्पावरमेंट. जो जिंदगी देती है, जो जान देती है, उसे पता ही नहीं कि उसे अपने आप को वैल्यू करना है. उसने जान दी थी यार. वो हर रोज जान क्यों दे रही है? अब समझ गए. जो दुनिया को जान देती है, वो अपनी जान क्यों ले रही है? वो क्यों जल के वार्ड्स के अंदर पड़ी है? वो क्यों नाराज है? क्यों उदास है? क्यों एम्पावर्ड फील नहीं कर रही है? आज भी क्या उसे एक आदमी साथ में चाहिए जो उसे एक नाम दे? आज भी वो अपना नाम अपनी मर्जी से पुकार नहीं सकती, क्योंकि ये कंडीशनिंग है मेरे यार. ये कंडीशनिंग है जिसे तुम एक्सेप्ट करते चले जा रहे हो. एक्सपैंड करो अपनी बाउंड्रीज यार. और फिर देखो, 1 इंच भी एक्सपैंड कर लिया ना, तो जन्नत तुम्हारे बच्चों के हाथ. चलिए, कौन नेक्स्ट शेयर कर रहा है? 2 लोगों की शेयरिंग हो सकती है. निशा जी, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो. आ जाइए, कुछ तो सुनाइए. मैं लेके आ रही हूँ आपको. बोलो बोलो, कुछ तो बोलो. हाँ जी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं. म्यूट ऑफ करें और बात करें हमारे से. शाबाश. अनु जी नमस्कार.
मैं असल में मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या बोलूं, इंग्लिश इतना मुझे जानकारी नहीं मैं है, हिंदी इसलिए मैं में कुछ बोल रही नहीं हूँ अटेंड कर जान, तू पाती। हिंदी में बोलना, तू क्यों अपनी हिंदी को काम कर रही है? तो भाषा किस बारे में बोलना है वैसे? वैसे बोलना अपने इसी बारे में है कि आपको क्या लगता है कि आप एम्पावर्ड कैसे फील करेंगी, मतलब आप क्या चीज? कैसे फील करेंगी एम्पावर्ड? एम्पावर्ड का मतलब क्या होता है कि हम फील कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सही जगह पे हैं, कंप्लीट हैं, पूरे हैं। आप पूरे कैसे महसूस करोगे एज अ औरत? नहीं, हम तो आपका प्रोग्राम होता है तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो भी है, जैसे सिंगिंग की है, आप ड्राइंग वगैरह भी सब कराती हैं, इसमें सारे जो भी प्रोग्राम होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि सबके अटेंड करूं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे अब 2-3 लोगों का प्रोग्राम एक ही टाइम में है, तो मुझे चेंज करना पड़ता है, और एक मोबाइल कर लेती हूँ और एक लैपटॉप में करके कर लेती हूँ, इस तरह से अटेंड करती हूँ। मतलब आप ये देखो, हमारी रेजिलियंस की दाद देनी पड़ेगी। हमने कुछ नहीं छोड़ा। हमने सासू माँ की बात सुनी, हमने हस्बैंड की भी बात रखी, बच्चे की भी बात रखी, और फिर हमने पूछा कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। नेहा जी, रेजिलियंस है आपके पास, वो चीज है थैंक यू। बहुत लोगों के पास होती नहीं। थैंक यू जी, शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी, एक इंसान और कौन शेयर करेगा? जल्दी जल्दी आ जाओ। नहीं सुनीता, चुप। मैं बस सुन रही थी, बड़ा मजा आ रहा था सबका सुन के। मैं अपना यही शेयर करूंगी कि जब मैंने स्टडीज कंप्लीट की तो मेरी जॉब लगी, तो आई वाज ऑन क्लाउड 7, क्लाउड 9, 7, 8। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतना सोचा कि मैं आगे क्या करूंगी। फिर मेरी मैरिज हो गई तो यहाँ सब एकदम डिफरेंट। तो मैंने जॉब के लिए कहा तो मेरी मदर का नहीं, अगर करना तो सब कुछ करना पड़ेगा भी। पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो कर सकूं, और मैंने नहीं किया। पर मैं अभी इतना रिपेंट करती हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ कि जो मेरे साथ की फ्रेंड्स थी वो भी रिटायर हुई हैं, तो कितना है। पर मैं अब कुछ कर नहीं सकती। तो पर फिर मेरे फैमिली में सब अच्छा हुआ, बच्चे अच्छे से सेटल डाउन हो गए, सब मैरिज हो गई, और अब मैंने ये गेट सेटअप ज्वाइन करके अब मैं अपना सब टाइम उसमें ही बिता रही हूँ। शाबाश सुनीता। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि हम अपने आप को कम करे जाते हैं। सच्चाई ये है कि हम अपने आप को कम करे जाते हैं, और उस कमी में हम अपने आप को ढूंढते हैं। आपने जो काम किया ना सुनीता, आपने अपने बच्चों को चूज किया, कुछ गलत नहीं किया। कहीं कहीं वो बैक ऑफ माइंड में वो रहता है अभी भी मुझे ना, कि जो मैं जैसे 2 साल ही मैंने वैसे जॉब किया था, पर वो जो इंडिपेंडेंस या दैट वाज एम्पावरमेंट एक्चुअली, नॉट नाउ। Thank you. Thank you. So today we did this beautiful program where हम समझे कि देखने में तो लगते हैं हम empowered, शायद महसूस नहीं करते हैं। मतलब दिन में 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, पर जब कोई हमारे से ज्यादा एम्पावर्ड हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, जब कोई हमारे से ज्यादा एम्पावर्ड आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो शायद हम उसे अथॉरिटी समझ लेते हैं। शायद उसे हम अथॉरिटी समझ लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोस्ती करें इस अथॉरिटी से। That happens to me, ma'am. It happens to me. Yes, ma'am. Very Very important. correct. It is very important कि हम रास्ते ढूंढे। अगर इस जेल में से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है, खुद से दोस्ती करो और उस अथॉरिटी से दोस्ती करो जो तुमको ज्यादा एम्पावर्ड लगती है। इसलिए नहीं
थोड़ी देर के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि वो भी इंसान एम्पावर्ड फील नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रू एम्पावरमेंट वो होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे बैठ के हंसते हैं, मस्ती करते हैं, स्माइल करते हैं। और अंदर से होती है। हाँ जी, वो काम करने से नहीं होती है, शादी करने से नहीं होती है, बच्चे पैदा करने से नहीं होती है, वो खुद को खुश रखने से होती है। और हमने तो खुशी का कहीं सौदा कर दिया है, किसी और को पकड़ा दी है, क्योंकि उनकी परवरिश में शायद हमने अपनी पूरी खुशी गवा दी है। टाइम है, वापस ले आइए, दे दिया जितना देना था, वापस ले आइए थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा स्माइल अपने चेहरे पे भी, क्योंकि इतनी लेबर करने के बाद अगर आपके चेहरे चूसे हुए मैंगो की तरह लगेंगे तो सामने वाला तुमको देख के ऐसा एम्पावरमेंट तो कभी नहीं चाहेगा। तो सबसे ज्यादा आज शाम तक के लिए, जब we will meet again at 5 o'clock in the evening and continue our charcha, to recognize the woman in us, my request to you is just try smiling till the evening. शाम तक मांग रही हूँ यार, खुद को थोड़ी देर के बाद लगेगा कि मैं ये क्या करूं। आप फोटोग्राफ के लिए करते हो ना, फोटोग्राफ के लिए नहीं, अपने दिल के लिए करना। जब स्माइल आए तो खुल के आज खुश होके स्माइल कर। चलिए आपको लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं, और लास्ट स्लाइड ये कहती हैं कि आज हमने रिफ्लेक्ट किया अबाउट बीइंग अ वुमन। हमने एम्पावरमेंट को खोद खोद के देखा और हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया। आप शेयर कीजिएगा प्लीज विद ऑल योर फ्रेंड्स कि आपने क्या सीखा, अगर कुछ सीखा। अगर नहीं सीखा तो भी शेयर करिएगा कि मैं सीखने वाली हूँ। एंड यू कैन find related classes by clicking explore. Please, I will be sending you an email. You will be getting a feedback form. Please fill that up, share your experiences with hashtag on Get Set Up, at Get Set Up, social at Get Set Up. अगर आप host करना चाहते हैं interest group, तो please help at getsetup.io पे connect कीजिए and you will be able to do it. I really want to thank each and every one of you, क्योंकि तुम्हारे साथ ये 1 घंटा रह के मैं बहुत एम्पावर्ड फील करती हूँ। शुक्रिया मुझे स्माइल देने के लिए, मेरे गाने सुनने के लिए और मेरी बातों को प्यार देने के लिए। तो ये मुझे एम्पावर करता है और आप सबने मुझे अलग अलग तरीके से एम्पावर किया है। तो धन्यवाद, शुक्रिया। फिर से जुड़े रहिए, शाम को फिर से मिलेंगे। Love you all. Stay happy. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Bye. Thank you.